वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी और अपनी चैनल बाइबल ऑफ डेरिवेटिव्स में। वेलकम टू बाइबल ऑफ डेरिवेटिव्स, a channel dedicated to educate yourself about the stock markets, as we believe that learning is earning। कि स्टॉक मार्केट में आपको तभी उतरना है जब आप पूरी तरह से सीख जाओ और किसी के ऊपर डिपेंड ना करो, तो ही आप खुद का काम खुद कर सकोगे और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। In our earlier video, we have discussed in details about the futures markets, its advantages and its risks behind it, how you can work on leverage and make huge profits. We had talked about the lot size, about the expiry date, how to do positional or swing trade by the concept of rollover or carry forward, and we have also spoken about premium, जिसको कि कॉन्टैंगो भी बोला जाता है, and about discount, जिसे कि बैकवर्डेशन भी बोला जाता है। In this video, we will cover exclusively about the index futures. इस वीडियो में हम इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में चर्चा करेंगे, like the Nifty futures and the Bank Nifty या Nifty Bank futures, and we will try to understand the difference between trading in stock futures and trading in index futures. So sit back friends and relax and enjoy the video, which will be very informative, I suppose, and it will be a proper education to garner knowledge and make yourself more knowledgeable about the future markets that will really help you in the real future in the stock markets. एक बात है कि वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, इससे आपको काफी जानकारी मिस हो जाएगी और नुकसान आप ही का होने वाला है, और समझदार इंसान कभी नुकसान नहीं करते हैं। So let's dive in friends. Let's begin with our new learning video. In the futures market, the two indices, the Nifty 50 and the Bank Nifty or the Nifty Bank, are traded in the futures segment. First, let's begin with the Nifty futures. पहले हम Nifty futures से शुरू करते हैं। Please do pay attention, थोड़ा ध्यान देना and try to get your concepts cleared. Nifty 50 has a lot size of 50, so in the Nifty futures you have to trade in lots of 50 and multiples of that. आपने अगर एक लॉट खरीदा या बेचा निफ्टी फ्यूचर्स का, तो आपको 50 शेयर्स का एक लॉट होता है। You can buy and sell multiple lots according to your conviction. पर यहाँ पे भी वो लेवरेज का बात आता है। लेवरेज पे आप चाहे फ्यूचर्स बेचो या खरीदो, एक ही आपका लेवरेज पड़ता है। Suppose spot Nifty is trading at 16,200. At the moment, the futures Nifty price will be a bit higher if it is trading in premium, or it will be a bit lower if it is trading in discount. अगर spot Nifty से futures Nifty का जो है वो अगर उससे ज़्यादा ट्रेड कर रहा है वैल्यू पे, मतलब वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, और उसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा है मतलब वो डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। इसके बारे में हमने इसका पहला वीडियो में भी बातचीत किया था। If Nifty spot या कैश is trading at 16,300, जैसे कि मैंने बताया, तो हो सकता है कि Nifty futures is trading at 16,330 with a premium of 30 points, which is true in most of the cases कि Nifty futures लगभग 90% टाइम्स जब ट्रेड होता है वो प्रीमियम पे ही ट्रेड होता है स्पॉट प्राइस के ऊपर, और कभी-कभी किसी कारण के वश it trades in discount
वो पकड़ लीजिए 10 to 15% टाइम्स हो सकता है. It can trade in discount to the cash market. That means it will trade lower than the cash market price. Say Nifty is trading at 16,300. यहाँ निफ्टी मतलब स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, और futures are trading at 16,280. So in this case, Nifty futures is trading at a discount of 20 points. I hope this part is clear to you. अब फ्यूचर्स में जैसे कि हमने पहले बताया कि एक एक्सपायरी होता है, जो कि होता है मंथली एक्सपायरी, जो कि हर महीने की लास्ट थर्सडे होता है. जैसे कि अभी जून महीना चल रहा है, तो द मंथली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी ऑन द लास्ट थर्सडे of the month of June, which happens to be on the 30th of June, जो कि coincidentally हो गया है जून मंथ का लास्ट दिन. You can buy or sell futures up to next 2 months also, where their premium will be a little bit higher. Suppose in the June month, you can buy futures, Nifty futures of July expiry and August expiry too, and these expiries will be as usual on the last Thursday of the July and the August month respectively. In the futures market, you can buy futures in lots or multiples of it. If you think that markets are bullish, आप सोच रहे हैं कि मार्केट बुलिश है और ये ऊपर जाने वाले हैं, तो you can buy Nifty futures and sell at a higher price and make profits. And if you think the market is bearish, कि मार्केट मंदी में रहने वाला है और नीचे गिरने वाला है, and the sentiment is negative and it is going to fall, you can short sell or sell futures and buy back at a lower price to get profits. So one thing is clear, in the futures market you can make money both the ways. In a bull market, when the market is going up, you can buy low and sell high to make profits, and in a bear market you can sell high and buy low to make profit. Now let's come to the margin requirements to buy or sell a lot of Nifty futures. If you buy or sell the same month expiry, the margin will be little less than if you go for futures expiry like for the next month like July or August expiry. And the margin requirement varies from day to day. As the lot size, which is fixed, that is 50 shares per lot in Nifty futures, but the futures price varies from day to day. The approximate margin required to buy or sell a lot of Nifty futures is about the contract value, which is equal to futures price multiplied by the lot size. Lot size तो हर वक्त फिक्स रहता है 50 in Nifty. So if Nifty futures is trading, suppose for example at 16,300, the total valuation will be 16,300 multiplied by the lot size, which is 50 in case of Nifty, which will be around 8,16,500 rupees. At the time of taking position, which can be on the buy side or the sell side according to the convection, you have to pay the margin, and the margin you require to pay is the span margin plus the exposure margin to buy or sell one lot of Nifty futures. The span margin is based on a statistical concept called VAR, which is actually value of risk. So the total margin will be around 20 to 30% of the total valuation, and which varies from day to day. ये हर दिन बदलता रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है. So the margin comes to be say let's 20% of 8,16,500, which is around 1,65,000 rupees, 1,65,000 rupees. So if you want to buy Nifty futures or sell Nifty futures, you have to pay a margin money of 1,65,000 rupees, including the span and exposure margin. If you have the capital in your trading account, आप
आराम से एक लॉन्ग निफ्टी फ्यूचर्स बाई और सेल कर सकते हैं आपकी कन्विक्शन के अनुसार। और आप now while trading Nifty futures, you should remember that Nifty is made up of 50 stocks. These 50 stocks are the topmost companies in India according to market capitalization, growth, revenue, and future prospects. But only a few stocks, about 10 to 12, have the maximum weightage in Nifty. So when you are trading in Nifty futures, one should always track these 10 to 12 stocks, rather 7 stocks literally, which I popularly call as Hrithik stocks, namely HRITIK, to remember more easily, ताकि हम उसे याद कर रख सके थोड़ा आसानी से। ऋतिक मतलब H for HDFC twins, like HDFC Bank and HDFC Limited. R stands for Reliance, I for Infosys, T for TCS, again I for ICICI Bank, and K for Kotak Bank. Apart from these 7 stocks, one should keep an eye or track the movement of stocks like ITC, SBI, State Bank of India, Titan, Larsen & Toubro, जिसको LNT भी बोला जाता है, and the Bajaj twins like Bajaj Finance and Bajaj Finserv, as these stocks have the highest weightage and the movement in these stocks helps the Nifty to propel higher or lower. मतलब कि ये जो 12 स्टॉक्स है, ऋतिक जो 7 स्टॉक्स को लेके बनाया जाता है, रिलायंस, HDFC twins, the IT twins like Infosys and TCS, ICICI Bank और Kotak Bank, और इसके अलावा ITC, SBI, Titan, Larsen & Toubro and the Bajaj twins like Bajaj Finance and Bajaj Finserv, इन सब के ऊपर आपको थोड़ा नजर गिरा के रखना है, क्योंकि इनमें मूवमेंट होने से निफ्टी ऊपर या नीचे करता है। So if you are trading in Nifty futures, you should always track these 7 to 12 stocks to gauge where the Nifty is going to go in the near future. Suppose you are bullish and you think that the market is going to go up, market ऊपर जाने वाला है, you can buy Nifty futures by paying the margin money. And if you are bearish and you think the market will go down, कि market गिरने वाला है और मंदी है, so you can sell Nifty futures by paying the same margin money. Whether you buy or sell, the margin money more or less remains the same. For example, एक example लेते हैं, Nifty futures suppose is trading at 16,300 and you are bullish on the market. आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है and you are sure that the market will go up, so you can buy futures का one lot or multiples of it and at a lower price and sell it higher. Suppose you have bought at 16,300 and the Nifty futures reaches 16,850 in a week. ये मूवमेंट 500-550 पॉइंट का आज के दिन में कोई बात नहीं है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है। निफ्टी अभी 500-550 पॉइंट एक हफ्ते में लगा देता है। So you can gain 520 points, so the total profit will be 520 points multiplied by the lot side, which is 50, so which comes around to 26,000 rupees. When you are on the sell side and you are bearish about the markets, मतलब आप सोच रहे हैं कि मंदी आने वाला है और मार्केट गिरने वाला है, so you can short and sell the futures and book profit when it goes down at a lower range. वही एग्जाम्पल को हम समझते हैं। Suppose the Nifty futures is trading at 16,330 and you sell one lot of futures and it goes down gradually to 15,800, so you can make up a profit of 530 points and you buy it lower, about जो आपने 16,330 में सेल किया था वो आपने 15,800 में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। So here in this case you are also getting about 530 points
and you are having a profit of little or more less than 26,000 rupees also. So this is how Nifty futures are traded in the stock market. Now let's come to Bank Nifty, which is another index which is traded in the futures segments. Its lot size is 25 and the payable margin is almost as same as the Nifty, as the Bank Nifty futures are trading at almost double the price of Nifty, around say 34,000 or 34,500 or 35,000, but the lot size is half of it. निफ्टी का लॉट साइज है 50 और बैंक निफ्टी का लॉट साइज बिल्कुल उसका हाफ है, मतलब 25. So bank nifty tends to be more volatile, and the 90% of the volume in futures market in the indices trading comes from bank nifty. As by the name you can understand that bank nifty is made up of banking stocks with the highest weightage they have on HDFC Twins, Axis Bank, ICICI Bank, Kotak Bank, State Bank of India, IndusInd Bank, and some PSU banks like PNB, Canara Bank, etc. etc. So अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये बैंकिंग स्टॉक्स में नजर रखना है कि ये बैंकिंग स्टॉक्स में मूवमेंट कैसे आ रहा है, स्पेशली द HDFC बैंक एंड ICICI, एक्सिस एंड कोटक बैंक, क्योंकि इनमें मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ होगा तो बैंक निफ्टी विल प्रोपेल हायर, एंड इफ देयर इज अ बेयरिश सेंटिमेंट इन दिस 4 or 5 stocks including State Bank of India, तो बैंक निफ्टी विल ग्रेजुअली फॉल. सो उसकी अनुसार आपको पोजीशन लेना है. द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग इन निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी इज सेम, बट द लॉट साइज इज डिफरेंट. Lot size in Bank Nifty is 25, and you can buy or sell as same as Nifty according to your conviction and make profits in both the sides. अगर मार्केट मतलब बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आप बाई करके हायर वैल्यू पे सेल करके प्रॉफिट कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी अगर नीचे गिर रहा है तो आप ऊपर में बाई करके नीचे लोअर प्राइस में ऊपर में सेल करके नीचे लोअर प्राइस में बाई करके भी प्रॉफिट कर सकते हैं. In the futures segment, whether it is stock futures or index futures like Nifty or Nifty Bank, there is a concept called mark to market or MTM. We have discussed it earlier in one of our videos. इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा. If you have not watched that video, we are providing the link of the video in the description box. Please do go and watch it, and for better clarity and more information. If you are on the buy side of the coin and the market moves up according to you, there will be no problem in MTM as you are in profit, and that is desired. And if you are on the sell side of the coin and the market goes down or moves down, there is no issue, and that's what you want. कि मार्केट गिरे और नीचे जाए तो आप सस्ता खरीद सकते हो. The problem arises when it moves in the opposite direction. Suppose you are on the buy side and you have bought one lot of Nifty and it starts to move down. So your MTM will be in loss and the margin money will increase according to your loss. And exactly in the same way, if you have sold Nifty futures and the market गिरने के बजाय it moves up and goes against you, your MTM will be negative or in loss and your margin money will increase. That should be in your trading account, or you will get a margin shortfall call from your broker. Even they can square your position if you do not react quickly to cover the margin shortfall. As I have said little earlier, this MTM or mark to mark concept has been clearly explained in our previous video. Please go and watch it for more clarity. Video link is in the description box. In the futures, the profit or loss due to MTM
is settled daily in your ledger, and the next day trading begins fresh from where the Nifty futures or the Bank Nifty futures have closed. I will give one example, and it is applicable for both in the buy and the sell side, whether you are in profit or a loss. Suppose you bought one lot of 50 Nifty futures at 16,000 and it ends at 16,120 at the end of the trading day. So your ledger will show a profit of 120 points plus a lot size which is 50, that is rupees 6,000, and the next day it will start fresh from 16,120 only, where the market closed on the earlier day. If it falls that day, suppose it falls from 16,120 and closes at 16,070, your ledger will show a loss of 50 points, that is 50 into multiplied by the lot sizes, that is 15 Nifty, which is rupees 2,500. So in futures, daily settlement is done in the ledger and accordingly margin adjustments are made. These settlement in the ledger on a daily basis according to MTM is also applicable in the same way in Nifty Bank or Bank Nifty and all the stock futures which is trading in the futures market. So ये जो MTM का कॉन्सेप्ट है और ये जो सेटलमेंट लेजर में होता है, जैसे हमने निफ्टी में बताया है एक एग्जांपल के थ्रू, वो सेम बैंक निफ्टी में भी होता है और जो भी स्टॉक फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड कर रहा है इन द फ्यूचर सेक्शन, उसमें भी होता है कि लेजर में डेली सेटलमेंट होता है और मार्केट या वो स्टॉक और या बैंक निफ्टी या निफ्टी जहां पे क्लोज करता है उसके बाद वाले दिन वहीं से उसका कैलकुलेशन शुरू होता है. So you can buy Nifty or Bank Nifty futures or sell them at any time within the expiry, book profits at any time within the expiry, or if you feel that you can roll over and carry it forward to the next month expiry too according to a conviction, and book your profits in any time in the next expiry too, or you can again shift to the next expiry. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कन्विक्शन क्या है, कि अगर आप आपके साइड पे ट्रेड जा रहा है, आप खरीदे हो, आपने बाय की हो और आपके साइड ऊपर की तरफ ट्रेड मार्केट मूव कर रहा है, तो यू कैन बुक प्रॉफिट्स एनी टाइम within the expiry on the expiry day, or you can roll over to the next expiry and so on. One more thing, during the time of monthly expiry, on the last date, last Thursday of the month, the spot price of Nifty and Nifty Bank and all the stock futures which are trading in the futures market coincides with the spot price. यानी कि एक्सपायरी के दिन जो स्पॉट प्राइस होता है वो निफ्टी का हो या बैंक निफ्टी का हो या कोई स्टॉक फ्यूचर्स का हो, वो स्पॉट प्राइस के साथ एक संग हो जाता है और उस महीने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है. So this is all about Nifty futures and Bank Nifty futures. So friends, hope this video was very informative and ये आपको प्रॉपर एक लर्निंग और एजुकेशन मिला है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए. हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है ये वीडियो बनाने में, तो आप अगर लाइक करोगे तो वी गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन. हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे भी ऐसे एजुकेटिव वीडियो आपके लिए ला सकें. डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. अगर आप बेल आइकॉन प्रेस करके रखोगे और ऑल पे क्लिक करोगे तो जब भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा. Please share the video to friends who are interested in the stock markets and want to learn and do their work individually without depending on others. And do comment if you have any questions. Please do write it in the comment section. We will definitely revert back as soon as possible. So यहीं पे आज हम इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है.
So thank you friends for watching. Thank you once again. Stay safe, stay happy, happy trading. Take care. Goodbye friends. See you again in the next video, which is going to come very very soon. हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हम भी कर चले अलविदा, अलविदा अलविदा मेरी राहें, अलविदा मेरी सांसें कहती है अलविदा, अलविदा अलविदा अब कहना और क्या, जब तूने कह दिया अलविदा। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, अरे दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ, लबों को लबों पे सजाओ। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल पल, ये है प्यार। तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है जहाँ है, तू ही मेरी दुनिया। तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा। यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार बेगरज तेरा हो या, कोई तो हो राज़दार। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू।